Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope everyone is doing well. एंड आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक फ़ोटोशॉप का बहुत ही सिंपल टेक्सचर। हम फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर्स को यूज़ करके अलग अलग टेक्सचर्स बना सकते हैं और आज हम उसी में से एक टेक्सचर देखने वाले हैं जिसका नाम है इरिडेसेंट। हम ये टेक्सचर सीखेंगे फ़ोटोशॉप में बहुत ही ईजीली। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, सो इरिडेसेंट टेक्सचर हमें सीखने के लिए दो कलर्स की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत ल्यूमिनस होते हैं। या तो अगर आपको मेटेलिक इफ़ेक्ट चाहिए तो आप थोड़े डार्क कलर्स भी ले सकते हैं। आई विल शो यू कि उसको मेटालिक इफ़ेक्ट कैसे देते हैं। फर्स्ट लेट्स चूज़ आवर कलर्स। हियर आई हैव चूज़न, मैंने एक ब्लैक कलर चूज़ किया है। आप स्वॉच के बिल्कुल लास्ट में जाएंगे ऑन द बॉटम लेफ्ट, तो आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। इसको ओके कर दे। ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, प्लीज़ रिमेंबर ये हमारा फोरग्राउंड कलर है। एंड बैकग्राउंड कलर मैंने थोड़ा मस्टर्ड टोन में लिया है। मैं इसका आपको कोड बता देती हूँ। द कोड इज़ B59F0F। ओ और एफ में थोड़ा फ़र्क होता है कीबोर्ड में। ओ इज़ समथिंग विच इज़ राउंड एंड ज़ीरो इज़ ओवल। So B5F9, sorry, B59F0F. Click OK. So these are our two colors on which we will work. So now what we will do, we will go up to filter, render and clouds. This way we will render our canvas. Then again we will go up to filter, filter gallery. From here, for creating this type of texture, you will take distort. Please open this folder distort. Then go up to glass. Select glass and then these are the settings there, which is the distortion is up to 20, the smoothness is 1 and the scaling is up to 200. You can change the scaling as per your requirement. It will give you different types of effect, but I am showing you the effect for the scale 200. Click OK and let's see what happens. Wow, our texture is ready. Now what we will do to give it a more shinier effect, what we will do, we will go on to the cookie button, right click on the cookie button and we will go on to curves. We will give it a curve. What we will do now, we are on the RGB mode. We are on the RGB mode and from here we will lift this a slight up to highlight the mustard color, and we will shift this downward to create shadows somewhere here. Now we will move up to red and we will create a balance out of this, a S type of curve. We will just try to make a S type of curve, as we already know कि जो हमारा फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है वो RGB मोड पे काम करता है. सो वी विल मूव दिस अप. हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो RGB मोड में है. Slightly here and blue one also slightly up and this one down. So this gives you a metallic effect. You can see the difference before adding curves and after adding curves. You can just see the difference between this, and I will just zoom and let you know कि ये texture कैसा दिखता है. This is how this texture looks. सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. एंड इसको आप किसी भी पैकेजिंग डिज़ाइन में, किसी पोस्टर में, पोस्ट में या शूज़ में, शूज़ के मॉकअप में अगर आपको डालना हो, आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ मल्टी टास्कर टेक्सचर. सो नाउ अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें ह्यू एंड सैचुरेशन ऐड कर सकती हूँ. ह्यू एंड सैचुरेशन हम लोग कैसे ऐड करते हैं, लेट्स सी दैट ऑल्सो.
हम लोग फिर से कुकी बटन पे राइट क्लिक करेंगे एंड आपको इधर थर्ड कॉलम में सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा ह्यू एंड सैचुरेशन। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप जब ह्यू वाले स्लाइडर को स्लाइड करेंगे तो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। इसका कलर मैं जो चाहती हूँ वो रख सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसका कलर थोड़ा ग्रीन रखा, अब मैं इसका लाइटनेस और डार्कनेस भी हैंडल कर सकती हूँ, सैचुरेशन भी हैंडल कर सकती हूँ लाइक दिस। अगर मुझे थोड़ा सा डीसैचुरेटेड चाहिए और या फिर अगर मुझे ये न्यूट्रल चाहिए तो मैं इसको न्यूट्रल भी रख सकती हूँ। मैं इसका डार्कनेस और लाइटनेस भी हैंडल कर सकती हूँ जैसे कि मैं चाहती हूँ। बट आप देख ही रहे हैं कि इट इज़ ऑलरेडी लुकिंग ब्यूटीफुल। दिस वे यू कैन ऐड कलर टू इट एंड this way you can just make its shadows and highlights more visible and more vibrant. I hope you like the today's video, and if you like, please subscribe to my channel. Thank you so much.